हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू masterbrainiq। तो आज आम देखा 2017 रीजनल बिड रे आसथिबा प्रीवियस क्वेश्चन जोटा कि टीचिंग एप्टीट्यूड रहइबो। ओके, तो पहले आज आम डिस्कस करबा क्वेश्चन गुडी को बुझिला। तोर टाइम प्ले देजी 40 मिनिट, आम ट्राई करबा 30 रु 35 मिनिट भितर क्वेश्चन गुडी को आलोचना करबा। ओके, तो पहले क्लास आरंभ करे पूर्व कह रखियो जे माने पहले चैनल रे नुवा अछो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो। डिस्क्रिप्शन रे हमरो एप्स रो लिंक रही छि एवं कोर्स मॉक टेस्ट से सब रो लिंक मध्ये प्रोवाइड कर दिया जाय छि। ओके, तो से लिंक रे क्लिक करी त माने पहले प्लस बैच रे जॉइन नहीं परबो। ओके, हमरो 98619 82155 नंबर रे व्हाट्सएप कर दबो। देन के भली बारे जॉइन करबो तार जानकारी पाइ जबो। बुझिला। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले। हमरो फर्स्ट क्वेश्चन होची, in Indian constitution education is a subject under central list, state list, district list, concurrent list। हमरा शिक्षा टाको क्यों लिस्ट रे रखा है? सेंट्रल लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट ना कॉन्करेंट लिस्ट? तो एटा बोले हमर बोले कॉन्करेंट लिस्ट रे रखा है हैला। मन रखियो ऑप्शन डी हैला। कॉन्करेंट लिस्ट बोले हमर केउ देश रा आसी? ऑस्ट्रेलिया। बुझला, मन रखियो। The main purpose of using concrete objects in teaching is to arouse interest in learning, develop performance skills, provide physical representation to abstract ideas, provide opportunity to manipulate the objects। तो बोले राइट आंसर इज मेन पर्पस बिल पचार टू प्रोवाइड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। To be successful in the class the teacher must know। क्लास रे सक्सेसफुल पाई हां the teacher must know। टीचर कौन जानिबा दरकार? the personality of pupils, subject matter and methods of teaching, science of behavior, all of the above। 23 नंबर 23 नंबर पे to be successful in the class the teacher must know। एटा पे दीटा ऑप्शन रहला, एट दीटा ऑप्शन भाई। तो कौन यार आंसर है जो बोले हमरो ऑल ऑफ द अबव हैला, ऑप्शन डी। देन जीवा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, if a student asked you something in the class and you don't know the answer, what will you do? Avoid the question, tell the student to meet you after class, tell that you will find out and tell him the next day, tell him to find out on his own। तो बोले राइट आंसर इज ऑप्शन सी, tell that you will find out and tell him the next day। परवर्ती दिन ताको तार आंसर के लिए कहबे। ओके, देन जीवा नेक्स्ट, which one of the following should a teacher practice to eliminate common classroom misbehavior without affecting the flow of the lesson? Imposing a token fine, use of non-verbal gestures, separating potential troublemakers from others, sending potential troublemakers out for rest of the class time। क्लास भितर पिला प्ले कॉमन मिसबिहेवियर करछन, एपट सेपट होछन, तो तुम कोन करबो? बोले यूज ऑफ
ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ଗେଷ୍ଟର୍ସ, ମୁହଁ ହଲେଇଦବ, ହଁ ଆଖିରେ ଏମିତି ଅନେଇଦବ ତ କଣ ପିଲାମାନେ ରହିଯିବେ ହେଲା। ୟୁଜ ଅଫ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ଗେଷ୍ଟର୍ସ, ଅପସନ ଡି। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, which of the following practices of a teacher does not encourage students to be creative? Encouraging students to practice different approaches in solving problems, rewarding textual answer, giving due importance to extraordinary ideas of students, encouraging the speculative responses. ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ not encourage student to be creative. ऑप्शन बी ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ରିଗାର୍ଡିଂ ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଆନ୍ସର, ବହି ଦେଖିକି ଆନ୍ସର କହିଦେବ କି এটা କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭ ନିଜେ ନିଜେ ଆନ୍ସର କରିବେ, ବୁଝିବେ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ହଁ ତାପରେ ତ ପିଲା କ୍ରିଏଟିଭ ହେବେ ନା। ତ ଅପସନ बी ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, then your next question, human development is affected by hereditary factors, environmental factors, interplay between genetic and environmental factors, socio-economic status of the child. Human development is affected by କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା affected ହେବେ? ଆମର ପିଲେ interplay between genetic and environmental factor. Genetic and environmental factor ପିଲେ ତାର ପିଲେ crucial role ରହିଛି human development। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, for communicating or to a hearing challenged child, a teacher has to use more of narration, non-verbal gestures, speaking loudly, audio aids. ले देखि दियो क्वेश्चन कोन अछि, हियरिंग चैलेंज चाइल्ड सुनिबार तार असुविधा अछि तो कोन करिवो, नरेशन तो हबनी, बड़ पाटे कहले तो सुबनी, बड़ पाटे कहले कोन हो, ऑडियो एड्स तो देले कोन हो, नॉन वर्बल गेस्चर्स रे बुझे देबो, ठारी देबो ताको एम्ति करो सेम्ति करो। हां, तो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। देन जिवा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, which of the following pairs should have a very close rapport in a school system? Child teacher, child parents, teacher head of the school, teacher parent. Very close rapport. स्कूल सिस्टम रे पचारछि, यदि होम रे पचारन ना चाइल्ड पेरेंट ही जाना, टीचर हेड ऑफ द स्कूल की रहबनी, टीचर पेरेंट हबनी, चाइल्ड पेरेंट हबनी, तो ऑप्शन ए हेटियो। बुझल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, then your next, your teacher divides the class into groups to work for arranging an exhibition. She asks for a volunteer volunteer from each of the groups to be a leader. What do you do? Keep silent, wait for the teacher to suggest. You volunteer to be the leader, suggest a friend's name to be the leader. Your teacher divides the class into groups. Class रे पिले तमरो ग्रुप कर दिया हला कोनोसी कार्य पई। She asks for a volunteer from each groups to be a leader. What do you do? रे प्रति ग्रुप रो जणो volunteer रखा हबो, तो तमे कोन करिवो? तो पिले आंसर कोन हेजिवो, your volunteer to be the leader. Okay, option C. There is a low achiever in your class. There is a low achievers in your class.
Who needs additional help in studies? What will you do as a teacher? Inform the parents about the child's performance. Insist on shifting to a lower class. Arrange for tuition. Teach the way the child understands. So right answer कौन है ଆମର option D. Teach the way the child understand. ସେମିତି ୱେରେ ବୁଝେଇବ ଯୋଉଥିରେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ତମେ ଏଣେ ପଢେଇ ଚାଲିଥିବ ପିଲା ସେଣେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିବ ପିଲା ତଳକୁ ଯାଉଥିବ ତମେ ଉପରକୁ ପଢେଇ ଚାଲିଥିବ କଣ ଲାଭ କିଛି ତ ହବନି ନା। ପିଲା କେମିତି ପଢେଇବ ପିଲା ଯେମିତି ପିଲା ବୁଝିପାରୁଥିବ ତମ ଲେବୁଲ ସହିତ ଲେବୁଲ ଦେଇକି ପିଲା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଓକେ ତ ଅପସନ D is the right answer. A teacher can be effective if she has subject content mastery, effective communication skills, ability to use appropriate teaching methods, all of the above. Best question गोटे तमन ପାଇଁ ଏଟା 32 number question. Subject content mastery ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, effective communication skill ନିହାତି ଦରକାର, ability to use appropriate teaching method ଏଟା ବି ଦରକାର, all of the above ସବୁ ଦରକାର। Option D is your right answer. Participating in team games enables development of emotional behavior, social behavior, physical adjustment, all of the above. Emotional behavior, social behavior, physical adjustment कौन कहते टीम गेम्स enables development of तीनटा जाक हबो बोले इमोशनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर एवं फिजिकल एडजस्टमेंट तीनटा जाक करियो। तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर, ऑप्शन डी। Then your next, Nita confides he problems with some of her classmates. That means Nita has good social adjustment, good mental adjustment, poor emotional adjustment, poor social adjustment. तबले जो ऑप्शन देखिबा एटी तो गुड सोशल एडजस्टमेंट से तो पिला सहित मिसी पारुनी तार प्रॉब्लम होछि तो गुड सोशल एडजस्टमेंट हबनी। गुड मेंटल एडजस्टमेंट से तो पागल नु किंतु तांको सहित किने मतभेद रहउछि तो गुड मेंटल एडजस्टमेंट तो हबनी। पुअर इमोशनल एडजस्टमेंट ना पुअर सोशल एडजस्टमेंट एई दिरे नकर आंसर तने करो। डिप्ले इमोशनल तो हबनी कदा भी बुझिला कि नहीं इमोशनल तो कदा भी हबनी किंतु पुअर सोशल एडजस्टमेंट से पिला मान सहित बा तार सांग साथी पिला मान सहित भलरे मिसी पारुनी दैट मींस पुअर सोशल एडजस्टमेंट ता बुझे शक्ति बहुत कम है कि नहीं तो पुअर सोशल एडजस्टमेंट ऑप्शन डी। देन योर नेक्स्ट 34 गला 35 जिबा interpersonal skills are best used when students with different abilities work together on a project, students with same abilities work together on a project, children play in play group, children watch a movie together. Interpersonal skills are best used when option A is the right answer. Students with different abilities work together on a project. विभिन्न प्रकार पिला मिसी गोटे प्रोजेक्ट करथिले सेटा हो इंटरपर्सनल स्किल्स आर बेस्ट। इंटरपर्सनल होची पिले अलग अलग पिला इंट्रापर्सनल होची निज भीतर निजे हैला। तो ऑप्शन ए हिज बाहर राइट आंसर बुझिला। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पिले the main current problem in Indian rural schools for facing global competition is lack of good teacher, lack of proper buildings,
lack of electricity and adequate ICT facilities, lack of motivation. ହେଲେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ମୋଟିଭେସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନା କଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ରହିବ? ତମାନେ ଦେଖୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଋତୁରେ ପିଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପିଲେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି ହଁ କି ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, କୋଉଠି ଗଛ ପଡ଼ି ପଡୁଛି, କୋଉ ଲାଇନ ଖୁଣ୍ଟରେ ପଡୁଛି, ତ ଲାଇନ ଫାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଜ ଦ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଉର୍ବନ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ ବି ପିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ସମୟରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଯଦି ରୁରାଲ ଏରିଆ ଦେଖିବ ସେଠାରେ ପିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଟା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଇଥାଏ? ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଡିକ୍ୱେଟ ଆଇସିଟି ଫାସିଲିଟି। ସେଟା ତମେ ପିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପଢେଇ ପାରିବନି, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ସେ ଜାଗା ଗୁଡାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ ଜାଣୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କଣ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗୁଡ ଟିଚର୍ସ ଛାଡ, ପ୍ରପର ବିଲ୍ଡିଂ ଛାଡ, ମୋଟିଭେସନ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। Then next question is the purpose of uniforms in schools is to identify the children of the school easily, to prevent students indulging the fashion and still look neat and tidy, to promote feeling of equality among students, all of the above. Number 37, the purpose of uniforms in school. ପିଲେ purpose ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାର purpose କଣ ରହିଛି? The identify the children of school the easily, obviously ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ଏଇ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା, ତା ହବ। To prevent students indulging in fashion and still look neat and tidy, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ନା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସଫା ସୁତୁରା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବେ। ହଁ, ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଫିଲିଂ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପିଲେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ ସମସ୍ତ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ଏଠି ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲା? ତ ତିନିଟା ଯାକ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି, ବୁଝିଲା? ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲେ। NCERT stands for NCERT ର ପିଲେ ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? National Committee for Educational Research and Training, National Council of Educational Resource and Training, National Council of Educational Research and Training, National Council of Educational Research and Teaching। प्रथम पिले को एनसीईआरटी तर एस्टाब्लिशमेंट केबे हेतिला? केबे 1961 रे। तो पिले तमने क्लियरली तम जानि परथुवा ऑप्शन रो फास्ट दिटा वर्ड देखिबो, लास्ट दिटा वर्ड देखिबो। नेशनल अछि कि रे, नेशनल कमिटी, कमिटी तो नहीं, नेशनल कमिटी एनसीईआरटी रे कमिटी एटा कला कटिला फास्ट ऑप्शन। देन जो देखिबा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्स, रिसोर्स देखिबो कि रे, रिसोर्स तो नहीं हमर एथिरे कटिला। देन देखिबा हमर ऑप्शन सी आउ डी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टीचिंग, टीचिंग हबनी पिले ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ହେଲା? ବୁଝିଲା? देन ଯିବା नेक्स्ट, केबे पिले एस्टाब्लिशमेंट हेतिला? 1961 रे। बेसिक एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महात्मा फुले, विनोबा भावे। बेसिक एजुकेशन मौलिक शिक्षा जोटा बिले हम कहि जानते,
तो बेसिक एजुकेशन के दिला हमर पले महात्मा गांधी हला ऑप्शन ए the main characteristic of educational practices today is teacher centeredness, child centeredness, information centeredness na knowledge centeredness the main characteristics टीचर सेंटर तो हबनी कथा भी हम जानछन्ती नॉलेज सेंटर तो सेंडिंग छ नाही तुम जानथिबो आ गुटे इन्फॉर्मेशन सेंटर कोन अछि कि रे कथा भी नाही तो कोन राइट हमर आंसर हियो ऑप्शन बी है चाइल्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस हैला वर्तमान पई चाइल्ड सेंटरनेस निया दरकार बुझला जेन दिबा नेक्स्ट which characteristic is of a child should a teacher encourage most for his intellectual development curiosity kindness honesty na hard work हमन देखि जो स्कूल मानक रे किछटा पिला थांती तमे अल्प टिके कोन पढौतिबो से तुमको खाली पचारिबे सर एटा केमति हला तो तांको भीतर कोन क्यूरियोसिटी रही जिनसटा को जानि बारो हां कि नै तो कोन आंसर ऑप्शन ए आ अलगा ऑप्शन गुडा देखो एगुडा नुहे ये पॉजिटिव आंसर होची ऑप्शन ए चला देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन which method of teaching is best suited for very young children very young माने पूरा पूरा छोट पिला पिले माने पिले खड़ी धरतिबे चखड़ी रेंदी गारोथिबे से माने भाई teaching in large groups teaching individually teaching in small groups ना play way teaching ले तो मन जानथिबो आगरो पिले गुडे आसे गणना काठी गोटे गोटे स्लेट आसे तळाडे एति थिबो लिखे भाई एइडे सब पिले थिबो एमती गोटे गोटे गोलिया गोली थिबो संख्या गणना पड़े हां कि नहीं तो पिले माने कोन आंगुडी रे एंद गणिबे 1 2 3 4 5 तो कोन से कोन जिंस खेलिबे प्रथम से खेली खेली गणिबे ता कोन इंटरेस्ट आसीबो तो कोन बे आंसर ऑप्शन कोन डी प्ले वे टीचिंग तमे तो तांगु लार्ज ग्रुप रे प्ले पढ़ाई पारिबोनी छोट पिला लार्ज ग्रुप रे पढ़ाइबो कि हबनी कथा भी इंडिविजुअल तो कदा भी पढ़ी पारिबोनी टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप छाड़ तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर then next question है a human teacher should necessarily have content mastery good communication ability leadership qualities compassion कौन हवन human teacher should necessarily have good communication ability पिले माने सहित भलो भाबले कम्युनिकेट करि पारथि दरकार एटा निहाज पिले दरकार मन देखो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर देन जीवा नेक्स्ट inclusive education is associated with inclusive education पिले का साथ associated inclusion of all student subject in the curriculum provision of education irrespective of any disability and disadvantage multi-class grouping sustainable education inclusive education पिले पचा देछि including of all subject curriculum रे पिले सब सब्जेक्ट गुडा गुले मिसै देबा कि रे हां नुए एटा हबन सस्टेनेबल एजुकेशन ना हबन मल्टी क्लास ग्रुपिंग ना हबन किंतु प्रोविजन ऑफ एजुकेशन irrespective of any disability and disadvantage ऑप्शन बी will be right answer okay then jiba next if a child is comfortable writing with his left hand he should be left गोटे पिला बा हाथ रे लेखु कोन कहबो
डिस्करेज करिवो एनकरेज करिवो ना अलाउ करिवो लेफ्ट हैंड लिखा पई कौन करियो प्ले discourage to use left hand encourage to write with right hand allow to use his left hand na ask to seek medical advice ये discourage काई गोटे प्ले करती बाहां तो लिखु जी लिखु କିଛି problem नहीं encourage to write with right hand ताको encourage काई से तो बाहां तो लिखु जी लिखु बाहां ताको हमें काई को right hand लिखिबा allow to use his left hand से बाहां तो लिखु जी लिखु बाहां କିଛି लेफ्ट तो बाहां तो लिखु ना तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर किला मेडिकल एडवाइस पठे बगरे कोन पे बुझिला तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर in majority of cases students do not like a teacher because ले बहुत सारा केस रे देखियो पिला माने शिक्षक मानु भल पांतेनी कोन कारण कोन the teacher lacks subject knowledge the teacher is unfair to students and displays favoritism the teacher gets angry the teacher gives more homework तमें देखि दियो पिले तम क्लास मान करे जणे जणे पिला थिबे हला से पिला मानु सार खूब भल पाउथिबे जाट कामल ताकू डाकुथिबे कहबे अरे पिले ताकू डाकी देलु हां ताकू डाकी देबे पिला पिला नो ये सार कोन ताकू खाली डाकु नाम जमा डाकु नंदी केबे हो कि नहीं देन जो देखिबे खाता देखाउ दिबो कोडे टेस्ट हे स्कूल खाता देखाउ दिबो से देखिबे ए पिलाटा को ए पिलाटा भलो मो साथे कथा बार्ता होची मिसुची भलो पाठ पढुची ताकू गोटे मार्क दी मार्क अधिक दे देबा तो कोन सिटी हला पिला मानकर अदर जो पिला मान तांकर टिके मोरल ऊपर मोरल डाउन हला कोन ताकू सारे अधिक पढौचंदी बुझौचंदी हमु किछि नाही ना तो पेट कोन हला द टीचर इज अनफेयर टू स्टूडेंट्स एंड डिस्प्लेस फेवरेटिज्म फेवरेट पिला मानु पिला तांको जो मानको मिसु दिबे से पिला मानको अधिक फेवरेट तांको सहित मिसु दिबे तांको परीक्षा रे अधिक मार्क बुथिबे तो कोन एगुडा अनफेयर ना तो पिला से जेमले लाइक करन सब भीतर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके देन जिबा नेक्स्ट फॉर ए बिगिनिंग टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट subject knowledge understanding the students behavior in the classroom availability of learning resources beginning teacher which of the following is most important first पे पढ़ोते हैं ले तमन जानथिबो जो मन बेड करछो ओटे टॉपिक थिला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर हला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर दछि ओटे टॉपिक बुझला तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जगह स्टूडेंट्स दे दीची तो गोटे पूरा टोटल गोटे सब्जेक्ट रही यार बुझिया भाई बुझे लगे ना तो ये आंसर ऑब्वियसली तुम जानि पाथु यार आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज जो आंसर की हला अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स प्रथम गोटे शिक्षक रो प्रथम मौलिक जदी देखिबा फर्स्ट प्रायोरिटी होची पिला मानु के मिल पारे बुझिरा हो कि नहीं तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन जिबा नेक्स्ट 47 गला then you have 48 RT was enacted in RT के enacted हेतला 2002 2005 2006 2009 केबे enacted हेतला कि 2009 रे राइट टू एजुकेशन हला option D then your next if few students in your class are not able to follow your teaching what will you do ये बहुत सारे पिला छन तुम जरा पढो जे पिला किछि बुझ पाना
कौन करो reduce speed of your speech, inform their parents, ignore them, analyze the reason for it. कौन करियो पिला न पड़े reduce speed of your speech जेटा कहूच मुझे पूरा स्पीडी कहि दउछ सेटा स्लो कहइबो सेमि स्लो कहइबो ना इनफॉर्म देयर तांको पिता माता को कहइबो पिला तुम कि तुम झियो बुझी पानी जरा पढौची ना इग्नोर ना इग्नोर कर दो ताले से जा पढन पढन तो मोर गला ना एनालाइज द रीजन फॉर इट ना जानिबो एक्चुअली कारण कोन यार कोन बांसा यार कारण कोन जानि पिले तुम पढौ पिला बुझी पाना ता मानकर पिला मानकर किछ भूल नाही तुम और पढारे नियादी भूल दिबो हां कि नाही तो एनालाइज करिवो कोन प्रॉब्लम होत पिला माने बुझी पाना तुम भल भाବରେ से लेवल पिले पिला मानको पढिबो हला ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर socialization of the child begins at primary school, kindergarten, high school ना होब socialization पहले बता दे socialization मान तुम आराम से आंसर कर दो धीरे धीरे प्रथम जन्म हबो तार सोशलाइज क्यों हबो समाज रु कोन शिखिबो कोउठु शिखे प्रथम तार प्रथम घर होची कोन तार निजर घर होम वाचा हला ऑप्शन डी घर हला प्रथम देन हला स्कूल बुझेला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो पहले आज पीवाकी सेशन टी एंड करिबा ओके तो नेक्स्ट आगो को एबळे पीवाकी सेशन मध्ये आनिबा एवं जो माने पहले इंटरेस्टेड अछि हमर प्लस बेस नेबा पई 98619 82155 नंबर पे व्हाट्सएप कर दबो ओके देन डिस्क्रिप्शन पे लिंक रही हमर टेलीग्राम लिंक हला व्हाट्सएप लिंक हला से लिंक जाई हमर चैनल रे जॉइन हो परिबो ओके हमर प्लस बैच ऐप मध्ये रही सेटा जाई जॉइन हो जिवो तो आज रो क्लास 2 को एंड करबा थैंक यू धन्यवाद।